Okay, Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing well. So today we are going to cover February March 2023 IGCSE Physics का paper 4 variant 2. ठीक है. So let's start with the paper. Yeah. देखते हैं थोड़ा सा zoom in करके. What's the first question here that we have? A boat crosses a river. The boat points at right angles to the river bank and it travels at 3.5 meters per second relative to the water. अच्छा जी. देखो हो ये रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डज अ रिवर बैंक लुक्स लाइक. बेटा ये रिवर बैंक होता है. रिवर बैंक एक हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है. रिवर बैंक इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन. लेट मी डू दिस. ठीक है. दिस इज योर रिवर bank. Perfect. You have a boat that is traveling at a velocity of 3.5 meters per second relative to water. तो आपकी बोट किस तरह ट्रैवल कर रही है बेटा? 3.5 meters per second, like this. Perfect. A river current acts at right angles to the direction of the boat. The river current has a speed of 2.5 meters per second. अच्छा जी, रिवर करंट क्या कर रहा है? रिवर करंट इज pointing at right angles to the direction where the boat points. तो मतलब आप कह सकते हो कि रिवर करंट इस तरह लग रहा है at a speed of 2.5 meters per second. Okay. By drawing a scale diagram or by calculation, whenever you have a choice to either draw a scale diagram or do calculation, always choose the calculation wala method. Why? Because there are less chances of error in calculation method. बेटा कैलकुलेशन मेथड में हमेशा लेस चांसेस ऑफ एरर होते हैं, तो आपने हमेशा कैलकुलेशन मेथड ही यूज करना है. ठीक है. इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट हमेशा कैलकुलेशन मेथड यूज करना. डिटरमाइन द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड रिलेटिव टू द रिवर बैंक. ओके. So you have to determine the speed. How will you do that? Can you realize? Can you humbly realize this is the head of the vector, back side is the tail of the vector. Head tail आपस में connected है. Can you mark the resultant vector? Yes. This is the head. Back side is the tail. Can you mark the resultant बच्चे? ये आ गया आपका resultant vector. Can you calculate the value of this resultant vector? Yes, simple Pythagoras theorem. Resultant square is equal to 2.5 का square plus 3.5 का square. What does your resultant comes out to be? Under root 2.5 square plus 3.5 square is equals to your resultant. बेटा resultant निकाल लो जरा क्या आता है. 2.5 square plus 3.5 का square. This comes out to be 4.3 meters per second is your resultant vector. 4.3 meters per second is your resultant vector. अब आपने स्पीड तो निकाल ली. यू हैव कैलकुलेटेड स्पीड. परफेक्ट. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द बोट relative to the river bank. बेटा रिवर बैंक क्या है? Horizontal. So you have to calculate the direction of the boat relative to the horizontal. You have to calculate this angle theta. कैसे निकालोगे ये एंगल थीटा? If you realize the side जहां पे एंगल और थीटा दोनों होते हैं, that is known as your base. The side opposite to the angle is your perpendicular. How will you calculate angle theta? Tan theta is equals to what? Perpendicular, that is 3.5 over base, that is 2.5. Theta is equals to what? Tan inverse 3.5 divided by 2.5. Can anyone in the chat calculate this answer, beta? Tan inverse 3.5 divided by 2.5. The answer comes out to be 54.5 degrees. If you round it off till two significant figures, देखो actual answer इस तरह से आ रहा है. The answer is like this. 54.46 degrees. If you round it off till two significant figures, ये 54 degrees हो जाएगा. Simple, nothing complicated here. 54 degrees is your answer. तो यहाँ पे 54 degrees लिख दो बेटा. Correct to two significant figures and यहाँ पे आप 4.3 meters per
सेकंड लिख दो, नो कंफ्यूजन here. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. State the name of one other scalar quantity and one other vector quantity. एक और scalar quantity का नाम क्या है? Distance. ओके, एक और वेक्टर क्वांटिटी का नाम क्या है बेटा? Displacement. Simple. Let's further move ahead. Figure 2.1 shows a ship loaded with containers. The ship is made of steel. The density of steel is this. The density of water is this. Explain why the ship floats in water. बेटा अब यहाँ पे एक की पॉइंट लिख लो. Materials that have materials that have a greater density than water will sink. बेटा जिस भी मटेरियल की डेंसिटी ग्रेटर देन वाटर होगी दे विल sink in water. Can you realize the density of steel is much greater than the density of water? स्टील की डेंसिटी क्या है? 7,800. वाटर की डेंसिटी क्या है? 1,000. तो स्टील को तो सिंक हो जाना चाहिए. बट वाई इज स्टील फ्लोटिंग इन वाटर? अब एक और की पॉइंट लिख लो. मटीरियल्स materials that have a lower density, that have a lower density than water will float. ठीक है. तो यहां पे तो आप रियलाइज कर सकते हो कि डेंसिटी ऑफ स्टील इज मच ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. तो देन हाउ इज द शिप फ्लोटिंग? बेटा ये जो शिप है ना उसमें ये स्टील की तो बनी हुई है. दिस हैज स्टील मॉलिक्यूल्स. बट इन स्टील मॉलिक्यूल्स के बीच में लार्ज एयर पॉकेट्स है. बेटा ये शिप जो है वो स्टील की ऑल्दो शिप बनी हुई है बट इस स्टील की शिप में लार्जर एयर पॉकेट्स है. ड्यू टू द एयर पॉकेट्स बिटवीन द स्टील द एवरेज डेंसिटी decreases. The average density becomes less than that of water, hence the ship floats. तो आप कह दोगे, you can say the ship contains what? Small air spaces. Small air spaces between not between the steel molecules. This causes the average density. This causes the average density of steel to be less than what? This causes the average density of ship. This causes the average density of ship to be less than that of water. Hence, it floats. बेटा एयर स्पेसेस की वजह से आपकी एवरेज डेंसिटी ऑफ द शिप बिकम्स लेस देन दैट ऑफ वाटर एंड हेंस द शिप फ्लोट्स. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. द कंटेनर्स विद द ग्रेटेस्ट मास आर लोडेड नियर द बॉटम ऑफ द शिप. अच्छा जी. जिन कंटेनर्स का मास सबसे ज्यादा है उनको हमने बॉटम ऑफ द शिप पे रख दिया. इधर इधर. द कंटेनर्स विद द ग्रेटेस्ट मास उनको हमने बॉटम ऑफ द शिप पे रख दिया. ओके. State and explain the effect on stability of the ship of loading the containers in this way. भाई अगर आपने हैवी कंटेनर्स को बॉटम पे रख दिया है तो इससे स्टेबिलिटी का क्या होगा? इससे स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफ द हेवियर कंटेनर्स आर एट द बॉटम व्हाट विल हैपन? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी लोअर. सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाएगी तो आपकी स्टेबिलिटी
बढ़ जाएगी। बेटा जितना आपका ऑब्जेक्ट बॉटम साइड पे हैवी होगा उतनी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाउ विल यू करेक्टली राइट दिस? हाँ जी, हाउ विल यू करेक्टली राइट दिस? यू विल से सिंस द बॉटम, बॉटम में लिखा है ना, हाँ, बॉटम of the ship is more heavy, center of gravity gets lowered. Center of gravity gets lowered. या center of gravity gets lowered या center of gravity नीचे हो जाती है, whatever you want to write it. ठीक है, center of gravity gets lowered. Hence, the ship becomes more stable. जितनी आपकी center of gravity लो होगी उतनी ज़्यादा आपकी ship और stable. Hence, the ship becomes more stable. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा। A crane lifts a container 48 meter vertically upwards. Okay, this is your height. The mass of the container. This ये mass आ गया. Calculate the energy transfer to gravitational potential energy stored in the container. Can you calculate the gravitational potential energy? Yes, mgh. Mass क्या है? 30,000. G क्या है? Whenever G की value is not given, you will take 9.8 multiplied by the height, that is 48. But can you calculate the gravitational potential energy? Yes. The gravitational potential energy comes out to be 1.41 10 is the power of 7 joules. Obviously, IGCSE physics may always round your answers to two significant figures. 1.4 10 is the power of 7 joules is your answer. Easy peasy lemon squeezy. Let's further move ahead. State the principle of conservation of energy. Energy can neither be created or destroyed. It gets transformed from one form into another. So यहाँ पे लिख लो, energy can neither be created, can neither be created nor destroyed. आप एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो. इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्स transforms from one form into another. Simple. A wind turbine has a maximum output power of this. The turbine operates at maximum power for 4 hours. Define the kilowatt hour का यूनिट. आपने किलोवाट आवर के यूनिट को डिफाइन करना है. हाउ विल यू डू दैट? किलोवाट आवर को आप किस तरह डिफाइन करोगे? यू विल से kilowatt hour is the energy transferred in 1 hour at a rate of 1 kilowatt. बेटा देखो किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, चलो मैं सिंपल अल्फाजों में समझा दूं. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम. इफ योर पावर इज 1 kilowatt acting for 1 hour, then the energy is said to be 1 kilowatt hour. एक तो हमेशा याद रखो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. और किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पावर ऑफ 1 kilowatt when a power of 1 kilowatt is acting for a time of 1 hour. So you will say energy transferred, energy transferred in 1 hour, energy transferred in 1 hour at a rate at a rate of what? At a rate of transfer of 1 kilowatt. Simple. Calculate the energy produced by the wind turbine operating at maximum power for 4 hours. Give your answer in kilowatt hour. अच्छा जी, टाइम आपके पास क्या आ गया बेटा? 4 hours. अच्छा जी,
पावर क्या है आपके पास? 1.8 मेगा वॉट्स। पावर क्या है बच्चे? पावर इज इक्वल टू 1.8 मेगा वोट्स। 1.8 10 is the power of 6 volts is your power. आपने एनर्जी निकालनी है इन किलोवाट आवर. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, whenever you have to calculate energy in the units of kilowatts hour, आपकी पावर किलोवाट्स में यूज करोगे आप, टाइम आप आवर्स में यूज करोगे. मैंने पहले ही बता दिया क्यों. क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम. अगर पावर को आप किलोवाट में रखते हो, टाइम को आप आवर्स में रखते हो, एनर्जी कम्स आउट टू बी इन किलोवाट आवर्स. ठीक है. अब टाइम तो आपका आवर्स में. हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू किलोवाट्स? 1 2 3 प्लेसेस फॉरवर्ड. 1800 10 is the power of 3 watts. This comes out to be what? 1800 kilowatts. Can you calculate the energy? Power into time. पावर क्या है? 1800 kilowatts. टाइम क्या है? 4. Can you calculate the energy in kilowatt hours, beta? Yes. The energy comes out to be 7200 kilowatt hours. है ना ये आसान? इजी. चलो आगे बढ़ते हैं. Radiation from the sun is the main source of energy for most of our energy resources. State two energy resources that are not due to radiation from the sun. कौन सी ऐसी energy resources हैं that are not due to the radiation from the sun? First of all, जियोथर्मल. जियोथर्मल में सन की रेडिएशंस का कोई पार्ट नहीं होता. टाइडल में भी कोई पार्ट नहीं होता सन का. थर्ड कौन सा लिख सकते हो? यहाँ पे तो हमसे टू पूछे हैं, मैं तीन बता देता हूँ जस्ट इन केस. थर्ड इज न्यूक्लियर. ये थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज ऐसी होती हैं जिसमें सन का कोई पार्ट नहीं होता. लेट्स सी दिस. फिगर 4.1. ओके. Shows a metal pan on an electric hot plate. The pan contains 200 cm cube of water. Perfect. The pan is heated. The temperature of the water in the pan increases. ठीक है. Temperature of water in the pan increases. Thermal energy is transferred through the metal pan by conduction. अच्छा जी, मेटल पैन के अंदर आपकी थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है थ्रू कंडक्शन. ओके. व्हाट एल्स डू वी हैव हियर? चलो वो भी पढ़ लेते हैं. क्या लिखा हुआ है बेटा? स्टेट एंड एक्सप्लेन टू वेज दैट थर्मल एनर्जी इज कंडक्टेड इन अ मेटल. किन दो तरीकों से थर्मल एनर्जी कंडक्ट होती है इन अ मेटल? व्हाट विल यू से? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन या फिर लैटिस वाइब्रेशन. यू विल से lattice vibrations causes energy to be transferred to neighboring particles. You will say ये अब वन करके तो नहीं लिखोगे. मैं सिर्फ बता रहा था कि दिस विल कैरी वन मार्क. यू विल से lattice vibrations. दिस इज योर फर्स्ट वे. ये फर्स्ट मेथड है ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी इन मेटल्स. lattice vibration transfer energy to what? Transfer energy to neighboring molecules या neighboring particles. Transfer energy to neighboring particles. अच्छा जी. सेकेंड मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट. नाउ इसको डिफाइन करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. यूजुअली स्टूडेंट जो है यहाँ पे मार खाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ. यू विल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स hit the more energetic molecules, hit the more energetic molecules and absorb energy. Absorb energy. उसके बाद सेकंड की पॉइंट क्या लिखोगे? हाँ जी, सेकंड की पॉइंट क्या लिखोगे? These electrons move through the metal. These electrons क्या करते हैं? Move through the metal and hit with distant molecules transferring energy.
hit with distant molecules, transferring energy. Simple. आगे बढ़ते. The water boils and leaves the liquid as a gas. Explain in terms of forces and distance between particles why the gas occupies much greater volume than it does as a liquid. अच्छा जी, गैस का वॉल्यूम ज़्यादा क्यों होता है, ठीक है. एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस एंड डिस्टेंस. बेटा हमेशा जो चीज़ एग्जामिनर करने को कह रहे हैं ना, वो ही करो. आपको फोर्सेस और डिस्टेंस के टर्म्स में बात करनी है, फोर्सेस और डिस्टेंस के टर्म्स में बात करो. अच्छा, so what can you say here? You can say the attractive forces between particles of liquid, between particles of liquid is much greater compared to that of gas. Compared to that of gas. उसके बाद आप क्या लिखोगे? Hence, molecules या particles ही लिख लो, since particles ही यहाँ पे reference word है. Hence, particles in gas are furthest apart. या कह सकते हो particles in gases are further apart from each other. In gases are further apart from each other. इससे two ways in which boiling differs from evaporation क्या कहोगे? Boiling occurs at a fixed temperature. However, evaporation occurs at all temperatures. However, evaporation occurs at all temperatures. Second key point क्या होगा? Boiling occurs throughout the liquid. Evaporation तो सिर्फ surface पे occur करती है, तो you can say boiling occurs throughout the surface. However, evaporation only occurs at the oh sorry, boiling occurs throughout the liquid. My bad. Boiling occurs throughout the liquid. However, evaporation only occurs at the surface. Simple. आगे बढ़ते बेटा, लेट्स मूव अहेड नाउ. क्या लिखा हुआ है? The water is replaced with 200 cm cube of milk. The initial temperature of milk is this. The final temperature of the milk is this. You are providing this amount of energy. ये आपका Q हो गया. ये initial temperature, final temperature, density भी आपको given है. You have to calculate the specific heat capacity. किस तरह करेंगे? Q is equals to mc delta T. First of all, you don't have the mass. Mass किस तरह निकालेंगे सर? Mass is equals to density into volume. Density की वैल्यू क्या है? 1.03. वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 200. बताओ क्या आंसर आ जाएगा? हाँ जी, क्या आंसर आ जाएगा? 206 ग्राम्स. ठीक है, 206 ग्राम्स इज योर मास. सही है. अब यहाँ पे आप इनपुट कर दो सारी वैल्यूज को. जस्ट प्लग एंड प्ले विद द वैल्यूज. क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. क्यू की वैल्यू क्या है? 60,700. मास की वैल्यू क्या है बेटा? 206. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है आपने. ओके. चेंज इन टेम्परेचर क्या है? फाइनल इज 95, इनिशियल इज 20. कैन यू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? यस. हाँ जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो. यस और नो? बिल्कुल निकाल सकते हो बेटा. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालो, क्या आता है? The specific heat capacity comes out to be 3.93 joules per gram डिग्री सेंटीग्रेड. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या आती है बेटा? 3.93 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. अब सर आपको कैसे पता चला कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मैंने ग्राम्स यूज़ करना है, किलोग्राम नहीं यूज़ करना? कैन यू रियलाइज यहाँ पे मैंने मास किस में यूज़ किया?
मास मैंने ग्राम्स की टर्म्स में यूज़ किया या ग्राम्स की यूनिट्स में यूज़ किया. दैट्स वाई मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट्स विल ऑल्सो कंटेन ग्राम्स. सिंपल. आगे बढ़ते बेटा. फिगर 5.1 shows a semi-circular transparent plastic block. Okay. A ray of light is incident normally on the curved surface of the block. The refractive index of plastic is 1.5. You have to calculate the critical angle. किस तरह करेंगे? N is equals to 1 over sin C. Critical refractive index है 1.5. 1 over sin C. Can you calculate the critical angle बेटा? बच्चे critical angle निकाल सकते हो. Sin inverse 1 over 1.5 is equals to your critical angle. Can you calculate that? कर सकते हो ये calculate. This comes out to be 41.8 degrees, that is equals to 42 degrees, since we round everything till two significant figures. On figure 2.1, draw the path of the ray in the block and after the ray emerges from the block. Okay. क्या आप रियलाइज कर सक रहे हो कि रे जो है इनिशियली 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है. Hence it will pass on without any deviation. Perfect. Then you have this normal. What will happen now? It will get totally internally reflected like this. बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी सर. आपको कैसे पता कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी लाइक दिस? लेट मी शो यू व्हाई. देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बच्चे इसलिए होगी क्योंकि अगर आप एक प्रोटेक्टर लो, इफ यू टेक अ प्रोटेक्टर and measure this angle of incidence I, this will be greater than the critical angle of 42 degrees. अगर आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस I को मेजर करोगे, this will be greater than the critical angle of 42 degrees. If your angle is greater than the critical angle, that means आपकी total internal reflection हो रही है, and that's what I have drawn here. Total internal reflection, easy peasy, lemon squeezy. Let's further move ahead. Figure 2.1 is a full scale diagram of a lens and an object. Okay. The point marked F shows the position of a principal focus of the lens. ठीक है, ये principal focus है lens का. Determine the focal length of the lens. What will you do? You will take a simple ruler or a scale and measure from the center of the lens to the focal point. बेटा आपने सेंटर ऑफ द लेंस से लेकर फोकल पॉइंट तक मेजरमेंट करनी है. टू कैलकुलेट फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी 7.2 सेंटीमीटर. सिंपल. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं. ऑन फिगर 5.2 ड्रॉ टू रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू लोकेट द इमेज. लेबल दिस आई. अच्छा जी अब हमने दो रेज निकालनी है टू लोकेट द image. First of all, let's do the dumb thing, and I will let you know in a minute why this is a dumb thing. Draw a ray passing through the optical center. Then, what will you do? Draw a ray parallel to the principal axis, hitting the or passing through the focal point. Now, one mistake here. क्या हमारे पास फोकल पॉइंट नहीं है बेटा? तो what can you do? You can measure 7.2 centimeter here and mark your focal point like this. ओहो चलो बाबा सीधे हो जाओ. चलो now, can you realize these are diverging rays? Can you humbly realize these are diverging rays? तो आपकी इमेज राइट साइड पे नहीं बनेगी. Now you could have also known this before even drawing these rays. बेटा ये आपको ये रेज ड्रॉ करने से पहले भी पता लग जाता. क्यों? Can you realize your object is placed before the focal point? Whenever the object is placed before the focal point, आपकी इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी. जब भी आपका ऑब्जेक्ट बिफोर द फोकल पॉइंट प्लेस होगा बेटा, आपकी इमेज हमेशा हमेशा क्या बनेगी? वर्चुअल. सर कैन यू लोकेट दिस वर्चुअल इमेज? यप. वन सेकेंड. व्हाट विल वी डू? वी विल एक्सटेंड दीज रेज. बेटा ये जो ग्रीन और पिंक वाली रेज हैं उनको एक्सटेंड कर दो बैक साइड पे. और उनको इमेजिनरी है इसलिए डॉटेड जरूर बनाना.
ठीक है. Now, yeah, so what you can do is you can make these lines dotted since they are imaginary. बेटा लेंस के बैक साइड पे जो भी रेज होंगी उनको हमेशा इमेजिनरी बना दो. The intersecting point of these rays is your image. इसमें हमने क्या किया है, जो हमने दो रेस बनाई थी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दे वर डाइवर्जिंग एक्चुअली, तो हमने उनको बैक साइड पे एक्सटेंड करके यहाँ पे मीट करवा दिया. दिस इज योर इमेज. परफेक्ट. वंस यू ड्रॉ इट ऑन अ पेपर इट विल बी मच मोर नीट एंड क्लीन. ओके. Figure 5.3 shows a simplified diagram of an eye with rays from a distant object and the path of the rays inside the eye for a person with short sightedness. अच्छा, person को कौन सी बीमारी हो गई है? Short sightedness. In short sightedness, do you remember we cannot see distant objects clearly. Distant objects आपको नहीं दिखते सही तरह. ओके. एंड क्यों नहीं दिखते? बिकॉज आपकी इमेज रेटिना से पहले फॉर्म होना शुरू हो जाती है. On figure 5.4, draw an additional lens outside the eye to correct short-sightedness. हमेशा याद रखो, short-sightedness को correct करने के लिए we use what? A diverging lens like this. Perfect. And show the path of the rays inside the eye. You have to show the path of the rays inside the eye. How will you do that? आपकी रेज इस तरह से आ रही होंगी बेटा, like this, like this, and like this. इसको अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं. Yeah. What will happen then? These rays, okay, let me zoom in a bit. I hope I can draw a better drawing with that. Okay, जैसे ये डाइवर्जिंग लेंस पे हिट करेंगे बेटा, दे विल स्टार्ट टू डाइवर्ज. इस तरह से ये डाइवर्ज हो जाएंगे. अब ये डाइवर्जेंस की अमाउंट थोड़ी सी अगर मैं तुम लोग को विजिबल करके दिखाऊं, तो लाइक दिस. एक बिल्कुल टॉप ऑफ द लेंस पे हिट कर रही होगी, एक बिल्कुल बॉटम ऑफ द लेंस पे. ठीक है. व्हाट विल हैपन देन? कन्वर्जिंग लेंस की वजह से दे विल converge at a single point like this. Like this. ठीक है. अब इसको मुझे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली खुद से टिल्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म. डायग्राम्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है. एंड आई हेट इट फॉर डायग्राम्स. चलो इसको हम थोड़ा सा और बेहतर कर देते हैं. लेट्स डू वन थिंग, लेट्स यूज थिन लाइंस. एंड लाइक दिस. ये आपकी इमेज फॉर्म हो रही है ऑन द रेटिना. ऑब्वियसली यू कैन ड्रॉ अ मच बेटर इमेज या मच बेटर ड्राइंग कंपेयर टू व्हेन यू आर ड्राइंग इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. बट यू हैव टू शो कि इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म हो रही है, पीछे रेटिना के फॉर्म नहीं हो रही. ओके. नाउ, साउंड वेव्स हैव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. कंप्रेशन क्या होता है? रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर या रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रेशर. यहाँ पे लिख लो, region where particles are closest together and are at maximum pressure या greatest pressure कह सकते हो. रेयरफैक्शन क्या होता है? रीजन where particles are furthest apart, furthest apart and are at minimum या least pressure. सिंपल. आगे बढ़ते हैं बेटा.
We can see light from sun, but we cannot hear any sound from it. State the reason for it. Sound requires a medium to travel. Light doesn't. यहाँ पे लिख दो light does not require a medium to travel, whereas sound requires a medium to travel. Requires a medium to travel. Perfect. During a thunderstorm, an observer sees the lightning almost immediately but hears the sound of a thunder several seconds later. The thunder and lightning are produced at the same time. The speed, the sound of the thunder is 9 seconds after the lightning is seen. The speed of the sound is this. You have to calculate the distance. Distance कैसे निकालोगे बेटा? Distance is equal to speed into time. स्पीड की क्या वैल्यू है 340, टाइम की क्या वैल्यू है 9. What does your distance comes out to be बच्चे? Distance comes out to be 340 into 9. The distance is equals to 3060 meters. This is equals to what? 3100 meters as your distance. Simple. Correct to two significant figures. आगे बढ़ते हैं. In a lightning strike, the current is this. For 48 milliseconds, you have to calculate the charge. Charge is equals to what? Current into time. ठीक है चार्ज किससे इक्वल होता है करंट इंटू टाइम करंट इज 3 इंटू 10 इज पावर ऑफ 4 48 मिली सेकेंड्स को किस तरह लिखेंगे 48 इंटू 10 इज पावर ऑफ -3 व्हाट डज योर चार्ज कम्स आउट टू बी चार्ज इज इक्वल्स टू 1400 कूलम सिंपल define potential difference what is potential difference work done per unit charge in moving a charge across the component हमेशा एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अक्रॉस चार्ज को मूव करोगे तो दैट विल बी नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस सो यू विल से वर्क डन per unit charge per unit charge in moving a charge in moving a charge across an electrical component simple as that आगे बढ़ते हैं बेटा. Now you have to state the equations which define electromotive force. Electromotive force is equals to what? Work done over charge. The EMF, अच्छा इसको पूरा भी लिख सकते हो. I would suggest कि यहाँ पे पूरी चीज लिख दो. EMF is equals to work done over charge. Leave no stone unturned. कोई मौका ना दो एग्जामिनर को. The EMF of the battery is this. The battery is in a circuit. Calculate the work done by the battery when it moves a charge of 30 coulombs around a circuit. So V is equals to W over Q. V is 9. You have to calculate W. Q is 30. Can you calculate the work done? 30 into 9. That comes out to be 270 joules as your work done. Simple, easy peasy, lemon squeezy. Let's further move ahead. A circuit contains of a DC power supply, a lamp and a thermistor. Draw these components in a series. Positive terminal of the DC power supply, negative terminal of the DC power supply. Then you have a lamp like this. बेटा थर्मिस्टर का क्या सिंबल होता है like this. All of them are connected in series. Perfect. आगे बढ़ते हैं. Explain what happens in the circuit you have drawn in C part 1 when the temperature of the thermistor is increased. As the temperature of thermistor is increased, क्या होगा? Its resistance decreases. The overall resistance of the circuit decreases. Hence the current in the circuit increases. So you will say as temperature increases, the resistance of thermistor decreases. The resistance of thermistor decreases, causing the overall या total लिख दो causing the total resistance to decrease and the current
in the circuit increases. Simple. Nothing complicated. आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, फिगर 8.1 शो द हॉरिजॉन्टल फ्लैट कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये एक कॉइल है इन अ मैग्नेटिक फील्ड. द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ सेल. ये देखते ही आपको क्या पता चल गया? दिस इज अ डीसी मोटर. ऑलवेज रिमेंबर, डीसी मोटर्स में आप खुद से पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हो. Determine the direction of movement of side AB relative to the plane of the coil. Okay, so you have to determine the direction of movement of this side AB. Which rule will we apply? Fleming's left hand rule. Sir, how do you know Fleming's left hand rule? Always remember, whenever you have a DC motor, you will apply Fleming's left hand rule. Secondly, here you have to calculate the direction or identify the direction of force. Direction of force जब भी identify करनी होगी कौन सा rule लगेगा? Fleming's left hand rule. So how will we apply Fleming's left hand rule? First of all, can you see this is the positive terminal of the battery, negative terminal of the battery? Current flows from the positive to the negative like this. Perfect. How is your magnetic field acting from north to south? The first finger points in the direction of magnetic field from north to south. Current points into the page, और ये कह सकते हो current points from A to B. Where will your direction of force be? बेटा फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी? आपका थंब कहाँ पॉइंट करेगा? Your thumb starts to point downward. Your direction of force is downward. The direction of force is down. अच्छा, हमसे क्या पूछा है? Direction of movement पूछी. Okay. So if the force is acting downward, what will happen? This side AB will move downwards. Perfect. साइड ए भी कहाँ पे मूव करना शुरू कर देगी? डाउनवर्ड. सिंपल. अब बढ़ते हैं आगे. एक्सप्लेन हाउ यू डिटरमाइन द डायरेक्शन इन ए. क्या बताओगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल. मैग्नेटिक फील्ड, या इस तरह लिख लो. फर्स्ट finger points in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field. Second finger points in the direction of current from A to B. The thumb या force points downwards. The thumb या फिर force points downwards. Easy peasy lemon squeezy. State and explain what happens to the coil as it reaches the vertical position. वर्टिकल पोजीशन पे कॉइल के साथ क्या होता है? एट द वर्टिकल पोजीशन द कॉइल स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट. फिर क्या होता है? हाँ जी. एट द वर्टिकल पोजीशन द कॉइल स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट. फिर क्या होता है? हाँ जी. एनी आइडिया जीनियसेस? क्या होता है फिर? वर्टिकल पोजीशन पे कॉइल स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट, देन व्हाट हैपेंस? हाँ जी बच्चों, व्हाट हैपेंस एट द वर्टिकल पोजीशन? आप क्या कहोगे? द कॉइल स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट. देखो, मोमेंटेरली स्टॉप आता है, ठीक है, बिल्कुल ही जाके स्टॉप नहीं कर जाती, सिर्फ एक दो मोमेंट के लिए स्टॉप करती है, वापस से रोटेट करना शुरू कर जाती है. द कॉइल स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट एट द वर्टिकल पोजीशन. एट द वर्टिकल पोजीशन and turning effect becomes zero. Becomes zero. Simple.
आगे बढ़ते हैं। To operate as a motor, a split ring commutator and brushes are added to the part shown in figure 8.1। ठीक है भाई, आपके मोटर की तरह ऑपरेट करने के लिए स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स एंड ब्रशेस आर एडेड to the part shown in figure 8.1। Explain the effect of split ring commutators and the brushes on the action of the motor। बेसिकली आपने स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर और ब्रशेस का पर्पस बताना है कि हम क्यों लगाते हैं। First of all, you will say what? Split ring commutators are attached to reverse the direction of current every half turn या every 180 degree। यहाँ पे लिख लो, split ring commutators commutators reverse the direction of current, reverse the direction of current every 180 डिग्री। बेटा हर 180 डिग्री की रोटेशन के बाद आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर रही है विदाउट टैंगलिंग द वायर्स। विदाउट क्या? विदाउट टैंगलिंग द वायर्स। सिंपल। Splattering commutators reverse the direction of current every 180 degree without tangling the wires। और ब्रशेस का क्या पर्पज होता है? ब्रशेस connect the coil and the external सर्किट। ठीक है, ब्रशेस क्या करती हैं? एक्सटर्नल सर्किट और कॉइल को कनेक्ट कर देती हैं। कभी कभार इस तरह भी लिखा होता है कि ब्रशेस इंश्योर कांस्टेंट करंट इज मेंटेन। ब्रशेस मेंटेन करंट, ये भी कभी कभार लिखा होता है मार्किंग स्कीम में। आई डोंट नो व्हाट इज इट इन दिस टाइम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A nuclear power station has a nuclear reactor where controlled nuclear fission of uranium 235 takes place। Explain what is meant by nuclear fission। Nuclear fission से आपका क्या मतलब है? What will happen? A neutron hits a large unstable nucleus। This unstable nucleus splits into smaller nuclei, causing the release of energy। तो लिख लो, you will say a neutron, ये वैसे मैंने नोट्स में भी लिखवाया, न्यूट्रॉन हिट्स a large unstable nuclei। फिर क्या होगा सेकंड पॉइंट? causing it to break into smaller nuclei। This releases energy। State one advantage and one disadvantage of generating electric power in nuclear power stations compared with electrical power generated using wind turbines। अच्छा जी, न्यूक्लियर पावर का एडवांटेज बताओ एंड डिसएडवांटेज बताओ कंपेयर टू विंड टर्बाइंस। एडवांटेज में आप क्या लिख दोगे? कांस्टेंट पावर सप्लाई या कांस्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में आपको वेरिएशन नहीं मिलती, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी मिलती है। ऐसा नहीं कि कभी हवा ज़्यादा चल रही है तो ज़्यादा एनर्जी आ गई, हवा कम चल रही है तो कम एनर्जी आ गई। नो, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि देयर कैन बी न्यूक्लियर लीक्स। ठीक है, so you can write danger if the nuclear fuel leaks। Perfect। Deuterium is an isotope of hydrogen with one proton and one neutron। अच्छा जी, आपके पास एक प्रोटॉन आ गया और एक न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर 2 हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन occurs when two nuclei of deuterium, अच्छा जी, दो न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूट्रियम fuse to form one isotope of helium and a neutron। अच्छा जी, न्यूट्रॉन बना देते हैं पहले। This is how a neutron looks like। सिंपल। अब आपने हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। हाउ विल यू राइट द हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन? चलो, यहाँ पे लिख देते हैं बी, यहाँ पे लिख देते हैं ए। यू हैव टू रिमेंबर सम ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑन
left hand side is equals to what? Sum of proton number on right hand side. बेटा प्रोटॉन नंबर का सम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑन राइट हैंड साइड. 1 + 1 is equals to a plus 0. a comes out to be 2. तो ये a की जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चे? 2. और सेकेंड चीज क्या सिखाई थी मैंने? एक और की पॉइंट भी लिखवाया था, याद है किसी को? यू विल से सम ऑफ मास नंबर on left hand side is equals to what? Sum of mass number on right hand side. लेफ्ट हैंड साइड पे मास नंबर क्या है? 2 + 2. राइट हैंड साइड पे मास नंबर क्या है? b + 1. b कम्स आउट टू बी 3. तो ये b की जगह आपने 3 रख देना है. सिंपल. यहाँ पे आप 3 रख दो. सिंपल. लेट्स फर्दर मूव अहेड. द टाइम टेकन फॉर मास टू ऑर्बिट द अर्थ इज दिस. अच्छा जी, ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया. द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मार्स इज दिस. ठीक है, ये स्पीड भी आ गई. एन अर्थ डे इज 24 hours. कैलकुलेट द एवरेज ऑर्बिटल. अच्छा, एवरेज ऑर्बिटल रेडियस गिवन है. ओके ओके, दिस इज योर रेडियस नॉट स्पीड. परफेक्ट परफेक्ट. आपने एवरेज ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है इन किलोमीटर पर सेकंड. हाउ विल वी डू दैट? ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/t. What is your R? 2.2810 is the power of 8. अब किलोमीटर से मीटर्स में नहीं कन्वर्ट करना, बिकॉज यू हैव टू गिव योर फाइनल आंसर इन किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय द टाइम, दैट इज 690 डेज. तो इसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो. 1 day has 24 hours. 24 hour 1 hour has 60 minutes. Each minute has 60 seconds. What does your answer comes out to be? Correct to two significant figures. The answer is 24 किलोमीटर्स पर सेकेंड. आंसर क्या आ जाता है बेटा? 24 किलोमीटर्स पर सेकेंड. आगे बढ़ते हैं. स्टेट द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स. प्लैनेट्स का यूजुअली शेप क्या होता है ऑर्बिट का? इलिप्स कह सकते हो, इलिप्टिकल कह सकते हो. मैं इलिप्स लिख देता हूँ. ओके, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय रेड शिफ्ट. रेड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस गैलेक्सीज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ. यहाँ पे लिख दो. Increase in wavelength of light. Increase in wavelength of light coming from distant galaxies moving away from Earth. Moving away from Earth. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा. State the quantity that the redshift of a galaxy is used to calculate. Redshift से हम क्या calculate कर सकते हैं? Speed with which the galaxy is moving. Speed of the galaxy. Yeah, speed with which the galaxy is moving away from Earth. Speed with which the galaxy is moving away from Earth. Is moving away from Earth. Simple. Easy. I think this marks the end of the paper. If you have any questions, you can ask in the comments.